how to compress large video files without losing quality using VLC. तो लेट्स स्टार्ट इट। VLC से हम वीडियो को कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ें हम एडिट कर सकते हैं वीडियो को, और VLC में बहुत ही आसान और बिना फाइल का क्वालिटी को हम यूज किए ही इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं वीडियो को। तो कैसे करना है? सबसे पहले नंबर आप इस वीडियो को देखिए, इसका क्वालिटी एंड इसका साइज यू कैन सी 20 MB। द वीडियो फाइल आर साइज जो है इसका 20 MB है। देन क्लोज इट एंड ओपन द VLC प्लेयर। अगर आपके पास VLC नहीं है देन आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। देन गो ऑन मीडिया एंड convert and save, click on this, then select that file which are converted. So I want to this video 20 MB, you can see here, and I click on this and select this video and the file are selected. Then click on this and I click on convert. The pop-up window or new pop-up windows are opened. Then select this and go down and video for YouTube HD. Click on this and the high quality. Then click on here, click on browse, then click on here and write here the new file name, not previous name. So I'll write here new video. Okay, then click on this save button, then click on start. The process has been started, you can see here, and wait here. the वीडियो फाइल के साइज पे ये निर्भर करेगा टाइम, जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। Then you can see here the process has been end. Then close this and new videos file is here. Then you can see here the file size. Click on properties. You can see this video file only 878 KB. You can see this video files are 20 MB and this video files are only 878 KB। तो 1 MB से भी कम का ये फाइल हमने बना लिया है। इस तरह से आप अपने वीडियो को, लार्ज वीडियो को, 2 GB 5 GB के वीडियो को आप कंप्रेस कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्वालिटी जो है ये प्रीवियस वीडियो का क्वालिटी है, इस तरह का है। एंड यू कैन सी इट हियर, आई गिव द group and I click on new video. Then you can see here both qualities are good. So this way you can compress the video in VLC media player. So thanks for watching this video.